So hey, what's up guys, welcome back to another video। तो आज हम यहाँ मिट्टुपल्यम रेलवे स्टेशन में हैं। तो मिट्टुपल्यम जैसे नाम आता है तो आपके दिमाग में शायद एक ही नाम होगा, लाइक टॉय ट्रेन। ऊटी को आए, टॉय ट्रेन की सवारी नहीं करे कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो 7 बजे ट्रेन आती है। अभी तक तो कोई भी ट्रेन आको नहीं है, लेकिन इंजन वहाँ सुनना दिख रहा रहेगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले नो इंजन स्टार्ट करें टॉय ट्रेन की। जैसे तुम्हें देख रही इंजन स्टार्ट हो गया है। उजाले में देखे तब भी मालूम होता। तो ऊपर से हम स्टीम जा रही है। हमारी टॉय ट्रेन सामने से ऐसे दिखते हैं। यहाँ और एक भी इंजन है, शायद मेंटेनेंस में है। जो भी है टॉय ट्रेन की सवारी करना चाहती, ऑनलाइन में टिकट्स अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके बुकिंग करो। ये अभी जाके पहली टिकट कोच कैरी कर लगा रहा है। बोगियाँ दिख रही हैं। अगर तुमने सफ़र का मज़ा लेना हो तो हर बार लाइक फ़र्स्ट क्लासेस बुक करो। ये तुमने लाइक 600 के आसपास पड़ता है बुकिंग को। तो नीलगिरी माउंटेन का मज़ा लेना हो तो फ़र्स्ट क्लासेस बुक करो। हमेशा टाइम लियो, बुकिंग करो, तुम्हारे प्लानिंग के हिसाब से तुम्हें बुकिंग करो। तो ये एग्जैक्ट 7:10 AM को निकलते हैं यहाँ से मिट्टुपल्यम से, और ऊटी को नियर बाई 12:15 को रीच होते हैं, विच नोन एज उडगमंडलम। तो ऊटी बोलते हैं उसे। तो चलो ट्रेन क्या तो भी करो, विंडो सीट एक बुकिंग करने की कोशिश करो। फाइनली हमें आके बैठ गए। अभी विंडो सीट मिले हमें, देखेंगे अच्छा व्यू मिला तो कैप्चर करेंगे। तो
फर्स्ट क्लास बुक करे तो ये फ़ायदा कि सीटा तुमने मस्त ऐसे मस्त फैल को बैठेगा। तो फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। लेट स्टार्ट हुई बट फाइनली स्टार्ट हो गई। ग्रीन झंडा दिखा दो यजमान बहुत देर के बाद। 7:10 को निकलना था, 7:15 होगी। में झंडे हला रही सिग्नल देखो। हर एक बोगी में आदमी है। तो हमारा पहला स्टॉप देखें कलार। फर्स्ट स्टॉप यहाँ से। எவ்வளோ நேரம் நிற்கிங்க? 10 minutes சார்। थोड़ा मेंटेनेंस कर ले ही है ना। बस स्टेशन कलार मेंटेन है तो मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा फास्टेज जाते हैं। स्टेशन कल्लार फर्स्ट। ट्रैक्टर उसमें जो हिल क्लाइम करने इंस्ट्रूमेंट आवाज़ के साथ आवाज़।
कि रैंडम जगह खड़ा को ही वाटर फिलिंग के वास्ते। और यहाँ का व्यू देखो तुम कैसा है।
building. தண்ணி பிடி. தண்ணி எப்பவுமே ஸ்டாக் இருக்கும், ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கிருந்து அடுத்த ஸ்டேஷன் போகிற வரைக்கும் 19 நாள் ஒன்று இருக்குது. அது டேங்கு, அது பைப் செட் டேங்க் இருக்கு, பைப்பெல்லாம் கழட்டியாச்சு. இல்லை 19 நாள் இது இருந்தது. இப்போ பைப் போட்டு வச்சுன்னா தண்ணி வருங்க.
ஆமாம் நம்ம ஆளெல்லாம் தெரியும். ஆமாம் மாடி. जैसे तुम्हें देख रहे हो मेरे पीछे ये इंस्ट्रूमेंट हो, जो तुम्हें म्यूज़ियम में देखे थे ना, ये वो ये ट्रेन को चढ़ाने में मदद करते हैं सब। स्टेशन का नाम हिल ग्रोव स्टेशन है। एक बहुत सारे ब्लॉगर्स के देखे वहाँ एक वाटरफॉल्स रहता है, भांजेंगे हमें भी भांजेंगे, कोई वाटरफॉल्स सब भी देती है ना। व्यू वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। तो ऊपर का व्यू कैसा है ये तरफ। ट्राई कर रहा हूँ कितना अच्छा वीडियो लेने के वास्ते, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अच्छी बनेंगे। अगर तुमने वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो ना को। तो हिल ग्रोव स्टेशन, यहाँ वाटर फिलिंग भी होते वापस से।
से ये हमारी स्टीम इंजन निकल को डीजल इंजन फिट होते हैं तो ऑलरेडी निकाल डाली ये इंजन निकाल को डीजल इंजन फिट कर दिया। तो इसके बाद जर्नी देखेंगे कब तक। तो ये इसके बाद है ऊटी है। नहीं रीच हो गया अभी फाइनली। तो हो गया ऊटी का बस स्टैंड है। उदगमंडलम स्टेशन known as Ooty. फाइनली रीच हो गए भाई ऊटी को। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बोलो ना।